Ayodhya, Varanasi and Mathura have become the focal points of religion and politics in Uttar Pradesh. After Prime Minister Narendra Modi led a grand Pran Pratishtha ceremony, the matter of Ayodhya is settled. अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं. This statement of Chief Minister Yogi Adityanath has set the grounds for a bigger debate. Is the BJP also making Kashi and Mathura as its big agenda now? Welcome everyone. You're watching a very special edition of Reporters Project. We're joining you from the world famous Kashi Vishwanath temple at the Kashi Vishwanath Dham. This show we are tracing the three big temple reclamation projects or disputes, whichever way you look at it, that are gaining pace, particularly after the Ayodhya judgment and Pran Pratishtha. I'm Shivani Gupta. And I am Aman Sharma. And the tone really was set by UP Chief Minister Yogi Adityanath when on the floor of the State Assembly recently, he said that the Hindus only want three sites, Mathura, Kashi and Ayodhya, because these are not any normal sites. These are places where our gods took incarnations, and for centuries, the Hindus had to literally beg for these sites, but the arrogance on the other side led to disputes. He even cited the story of Mahabharata, where Lord Krishna had asked Duryodhana only for 5 villages. Duryodhana refused and the war of Mahabharata ensued. Now there is a renewed push, particularly for cases of Mathura and Kashi in Indian courts. Now some of these petitions have been going on for many years, and some were filed post the Ayodhya judgment in a renewed hope that courts will provide relief in these three big temple sites. Ayodhya has been settled. What about Kashi and Mathura is the big question now. And over the course of this show, we're going to take you to Ayodhya, we're going to travel to Mathura, and then Aman and I are going to meet you back here in Kashi. More than 2 lakh devotees are flocking to the Ram Mandir every day with a sense of pride. Chief Minister Yogi Adityanath making it clear that the three religious sites of Ayodhya, Mathura and Kashi remain on the top of the agenda of the BJP. But these three religious sites are also the center of the politics in the heartland in Uttar Pradesh as well as larger parts of the country ahead of the 2024 battle. Here in Ayodhya, where thousands and hundreds of devotees, nearly 2 lakh people come daily to Ayodhya ever since the temple opened from the Pran Pratishtha ceremony, people are coming here with this larger Hindu consciousness. From across the country and around the world, devotees say Hindu pride has been restored by the Modi government. तो जब पहली बार आप आए रामलला को टेंट में देखा, अब आप भव्य मंदिर में देखेंगे, क्या फर्क है उसमें, क्या इमोशन का फर्क है? अद्भुत है, बहुत आनंद. मतलब पहले भगवान अपने उसमें थे, अब महल में आ गए, तो काफी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है जी. अब तो बड़ा भव्य मंदिर, अब तो महल बन गया है. बस यही फर्क है. तो भगवान तो वही थे, बस अब स्वरूप अलग हो गया है. मोदी जी ने कहा पार्लियामेंट में कि ये जो एक राम मंदिर बनाए, इतने हिस्टोरिक ओकेजन है इतने सालों के बाद, और अमित शाह जी ने कहा कि 1000 सालों तक इस बात को याद रखा जाएगा. बिल्कुल सर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ 1000 साल क्या, हमेशा युगों तक ये अयोध्या मंदिर याद रखा जाएगा. और जैसे भगवान 500 साल तक टेंट में विराजे, इतनी कठोर परिश्रम के बाद आज हम लोगों को सपना पूरा हुआ है. जय श्री राम. आपके साथ यंगस्टर भी हैं, आपके बेटे हैं, तो यंग जनरेशन इसको कैसे देखती है? बिकॉज ओल्ड जनरेशन को तो कनेक्ट है, आपको लगता है यंग जनरेशन का भी कनेक्ट है? यंग जनरेशन का बिल्कुल कनेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे हर छोटी सी उम्र से बच्चे आने स्टार्ट हो रहे हैं, 5 साल 6 साल और 10 साल से लेके सब यंग लोग जैसे जैसे मंदिर में आएंगे, उनको यहाँ पे रामलीला के बारे में पता चलेगा, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए जाते हैं उनके बारे में पता चलेगा. I have a family here who's come all the way from the US. What is the feeling of coming to Ayodhya? Why have you taken this long journey to Ayodhya? How would you describe it? I mean, I feel I got lucky that I got the opportunity to come and see the temple so early. It's a blessing. I've never been so proud to be a Hindu. I can say proudly that I'm a Hindu now.
and it's a blessing that we are here. It's just we are here for the Lord Ram. This is not a political problem. It's a historical problem and a sentimental problem. We Indians, we Bharatiyas, we love to have a temple here. So we are to see that, we are to enjoy that, we are to experience that, because last hundreds of years, 500 years, it was not our temple. It was a mosque. We have to find out our identity here. And this is our temple, this is Rama temple. That should be a truth. "30 kilometers away, there has been no progress at the 5-acre land in Dhanipur village, where a mosque has to come up after the Supreme Court's 2019 order. A half an hour's drive of about 30 kilometers from the Grand Ram Temple in Ayodhya brings us here to Dhanipur. And this poster here announces that this is the piece of land, this is the 5 acres of land where a grand mosque is going to come up. It will be called Masjid Muhammad bin Abdullah Mosque, being built by the Indo-Islamic Cultural Foundation. It says a masterpiece is in the making. Perhaps one of the world's most beautiful mosques of 5 minarets will come up here in Dhanipur. But even 4 years after the Supreme Court had announced this in its judgment, saying that the Muslims will be given this 5 acre of land away from the temple, you can see no activity has happened here at all. The land is completely barren. In fact, a game of cricket is going on with some children playing here as we arrived here today. Nothing much has happened, though the people and the Indo-Islamic Cultural Foundation say that post-Ramzan this April, the construction of this mosque could finally start. सारा संसार खाली पड़ा है, कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। वैसे भी मस्जिदें गांव में 14-15, मैं मस्जिद विरोधी नहीं हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ जी। मस्जिद हमें चाहिए, लेकिन इसी जगह में एक छोटी सी मस्जिद बना करके हॉस्पिटल स्कूल बना दिया जाए। बिल्कुल, उसमें हर धर्म के लोगों का इलाज होगा। A feeling of pride and glory. This is what many devotees coming to the Sri Ram temple in Ayodhya told us about their experience of coming to this holy town from across the country. In fact, just in the 1 month after the Pran Pratishthan ceremony, over 50 lakh devotees have come to Ayodhya from across the country. Many people say that it is the efforts of Prime Minister Narendra Modi and UP Chief Minister Yogi Adityanath that has made the Ram temple in Ayodhya possible. But does the BJP now have bigger plans? The Chief Minister's statement that if a Ram temple has been built in Ayodhya, how can the issues of Kashi and Mathura be left behind? This is leading to the BJP doubling down on the Ayodhya issue, and we saw a special resolution in Parliament as well as a special resolution being moved in the BJP's National Convention on the historic construction of the Ayodhya's Ram temple. We now take you to Mathura, where a new legal battle seems to be brewing for the Sri Krishna temple, which has been in a dispute with an adjoining mosque there for many, many years. Even as the euphoria around the Ram Temple Pran Pratishtha in Ayodhya was at its peak, cases of the other two big temple reclamations in India, Mathura and Kashi, have also been picking up pace, at least in courts. Now, it may seem that this is happening because of the Ayodhya effect, or even perhaps because of the impending general elections. The reality, though, also is that a lot of these cases have been pending in courts for a very long time, some of these petitions pending for many decades. Now, in Mathura most recently, Allahabad High Court ordered a survey of the Eidgah site quite on the lines of the Gyanvapi Mosque in Kashi, only for the Supreme Court to, at least for now, stay that order. But that hasn't stopped politicians or saints from bringing the focus back to the pending dispute of Kashi and Mathura. एक बात तो मैं स्वयं समझता हूं कि पहले से ही यह प्रार्थना सब लोगों से की जाती रही है कि केवल इन 3 मंदिरों को हम लोग पूर्ण तरह से विमुक्त कर सके, इतनी हमारी आकांक्षा है। तो इसलिए इन मंदिरों का भी कभी न कभी मुक्त होना स्वाभाविक लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि न्याय की प्रक्रिया से यह काम निश्चित रूप से आसान होगा। Now, out of the 3
the Mathura case is possibly the most complex because in this case exists a 1968 agreement between the Janamsthan Seva Sangh and the Shahi Eidgah, which divided the current land into its present form. Now that agreement is challenged by the Krishna Janmabhoomi Trust on the grounds that the erstwhile Seva Sangh, which is today the Sansthan, had no powers or locus standi to enter into this agreement and divide the land. जिनने किया न तो ट्रस्ट ने उनको ऑथराइज किया, मतलब ऑनरशिप ट्रस्ट में होती है, एक बॉडी होती है, बड़े ट्रस्ट जो है वो अपना जो है रूटीन वर्क को देखने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी और लोकल बना देते हैं और उसका रिन्यूअल करते रहते हैं हर 2 साल बाद। लेकिन वो जो है डे टू डे रूटीन वर्क है उनको करने के लिए उनको ऑथराइज करते हैं। ऑनरशिप जो है कभी भी ट्रस्ट से ट्रांसफर नहीं होती। इवन जो किशोर ट्रस्ट जब बनाया गया तो उसमें तो ये पहला क्लॉज था, फंडामेंटल क्लॉज जो था उसका, कि वो ट्रस्ट भी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जी जी नहीं, पर आपको नहीं लगता, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत समय निकल गया और अब 2023 में ये केस दोबारा से उठाया गया। ठाकुर जी की संपत्ति नाबालिग संपत्ति होती है, माइनर संपत्ति बोली जाती है, और हम ये कहते हैं कि जब जो है जिसको आप कहते हो उन्होंने नहीं किया, उनको ही अब राइट नहीं है ट्रांसफर करने का, तो किसने किया उसका वो असर ही कोई नहीं है उसका। तो ट्रस्ट ने बहुत देरी नहीं कर दी इसको? नहीं, जब मैं कहता हूँ जब ट्रस्टों को असर ही नहीं है, मैं आपसे बार बार कहूँगा कोई सामने बात करे, चाहे वो खसरा हो, चाहे खेवट हो, चाहे खतौनी हो, चाहे म्यूनिसिपल रिकॉर्ड हो, इवन ईदगाह समेत जो परसर जिन पे अवैध कब्जा है उसका टैक्स भी जनरल ट्रस्ट दे रहा है। भले ही वो रह रहे हैं लेकिन मालिकियत के खाने में आज भी नाम कृष्ण हुए ट्रस्ट गई है। तो यदि उन पर कोई राइट होता तो अब तक वो 60 साल तक चुप बैठे रहते क्या? देखिए इशू ये था जब धर्म संसद हुई विज्ञान भवन दिल्ली में 84 में विष्णु ने पहली धर्म संसद बुलाई, तो ये था कि लगभग 30,000 स्थान ऐसे हैं जहाँ पहले मंदिर थे, आज भी मस्जिद खड़ी हुई है। 3,000 स्थान ऐसे तीर्थों पे यहाँ जो पहले मंदिर थे, तो हम ना 30,000 की बात कर रहे हैं न हम 3,000 की बात कर रहे। अयोध्या, मथुरा, काशी, राम कृष्ण शिव, इनको हटा दें तो हिंदू समाज पर कोई बचता ही नहीं है। ये मंदिर का विषय नहीं है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, वह राम जन्मभूमि थी। ये मंदिर भव्य स्मारक इसका विषय नहीं है, ये है भूमि, और भूमि परिवर्तन नहीं हो सकती। ये आइडेंटिटी है, ये अस्मिता है हिंदू समाज की, उससे कभी कोई नकार, और किसी को राइट भी नहीं नकारने का। जी अच्छा हो समय का ये बहुत बड़ा संकेत है अयोध्या। अच्छा ये हो कि वो जो है स्वार्थ का परिचय दे और अवैध कब्जा ना हटा ले, तो उनको धन्यवाद भी दिया जाएगा। और अयोध्या में दूसरी मस्जिद पर मना कर रहा है क्या? Let's try and talk to people in the twin cities of Mathura and Vrindavan. What do they think about the movements that are once again gaining pace? I'm at one very popular eatery shop. ये अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा के कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन केसेस में भी कुछ समाधान हो पाएगा? होना चाहिए, जब मोदी है होना चाहिए। अच्छा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अब अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा की बात करने की क्या जरूरत है? तो देखिए हिस्ट्री में जो हुआ है उसको करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हिस्ट्री छुपाई नहीं जा सकती, जितना दबाया जाए उतना ही वो उभर के आएगी। आप अगर इतिहास खोल के देखें तो जब भारत आज़ाद हुआ है तो भारत की आज़ादी में मुस्लिम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो लोग भी क्रांतिकारी रहे हैं, फांसी पे वो लोग भी झूले हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप मुस्लिम विशेष से है क्या इस चीज़ को जोड़ रहे हो। मुस्लिमों की जगह जो मुस्लिमों को दी जाए, हिंदुओं की जगह वो हिंदुओं को दी जाए। आपका एक सवाल था कि सरकार पे विश्वास है या कोर्ट पे? सरकार पे कोर्ट पे विश्वास है, बट उससे ज्यादा विश्वास सरकार पे है। सरकारें आई है गई है, बट आज तक किसी में दम नहीं हुआ ये मुद्दा उठाने का। हाँ, तो यही बात हो रही है। अब जैसे अयोध्या में भी एक्सकवेशन हुआ था, अब मथुरा में भी, काशी में भी उसकी बात हो रही है, सर्वे की बात हो रही है। आपको लगता है सच्चाई उसी से सामने आएगी? जी जी, सर्वे होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा हमारा है हमारा है, जब तक प्रूफ नहीं आएगा तब तक तो कैसे पता लगेगा ना। सर्वे की बात करेंगे तो कोर्ट पे पूरा विश्वास है, जो उनका फैसला होगा वो बिल्कुल तहे दिल से हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो। श्री कृष्ण जय श्री राम। There is no denying that the sentiment of the public is associated with this issue, which also has its own intrinsic politics attached to it. But regardless of the politics, the public feels that these are movements, these are fights that have been long ongoing, and they will not rest at least until the three most important sites of Ayodhya, Kashi and Mathura are decided. Coming up after the break, we return to Varanasi, where the Gyanvapi dispute has taken center stage.
So after touring Mathura and Ayodhya, we are back in Kashi, and you can see right behind us is the entry of the Kashi Vishwanath Dham. This is from the ghats that leads to a corridor that finally leads to the temple and more. Of course, that has really changed the entire landscape of Kashi. But speaking of the temples that we've been talking about, Aman, what was your experience in Ayodhya? Well, and Shivani, this is also the place from where the Prime Minister had walked up, you know, 2 years back when he came to inaugurate the Kashi Vishwanath corridor. And since then, we have seen almost 14 crore pilgrims come to Kashi Vishwanath corridor since the PM inaugurated it. But the experience of being to Ayodhya and Mathura, I see, if you go to Ayodhya right now, Shivani, if you speak to people there, there is this sense of pride and glory that the people, you know, feel. The people come there and say, see, we have seen Ram Lalla under a tent. There were many people I met who said we saw Ram Lalla under a tent, and now we see him in this grand temple. So it's quite a sight. You know, we feel proud. We feel that Lord Ram Lalla has finally got his due, got a grand temple, and this is something for which the Hindu community was, you know, asking for very long. And that is something that I think the feeling I got. Of course, the dispute is settled in Ayodhya. Yeah. Even the Muslim side, you know, in Ayodhya is now okay with it. We also went to the mosque, which is coming up, you know, about 20 kilometers away, where the construction is about to start in April. So in a way, there seems to be a closure to the dispute in Ayodhya. Did you get that sense in Mathura at all? Well, obviously in Mathura, the dispute is only picking up, and fresh petitions have been filed. The settlement that has been done in 1968 is under challenge. The sense I got was that the public really does care about these issues. It's not really a conflict between them wanting development or wanting temples, but they're no longer in the mood for a social upheaval or the kind of movement that Ayodhya saw at one time. They're very happy with letting the courts do you know, the checking. They're very confident, at least most of the Hindu devotees are very confident that the evidence is so strong that they will be able to prove their cases as far as Mathura and Kashi is concerned. And particularly in the case of Kashi, for example, you know, the evidence is almost clear to the naked eye. वर्तमान में जो वो प्लेसेज ऑफ वारशिप एक्ट है, उसके परव्यू से अयोध्या बाहर था। वहाँ यह प्रमाण देकर कि पहले क्या था, चीज़ें सिद्ध हुई। यहाँ जो केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, इसका जिस जो है, जिसमें शैलेंद्र कुमार पाठक वादी हैं, उन्होंने मुकदमा किया है, वो है कि 15 अगस्त 1947 को नेचर ऑफ प्लेस क्या था। तो यहाँ पूजा होती थी या फिर नहीं होती थी। तो पूजा होने का एएसआई ने भी जो अपना अभी सर्वे किया है, उसके प्रमाण भी आपने देखे हैं। व्यास जी ताखाना मामले में जो परिणाम आया न्यायालय का, वो उन्हीं प्रमाणों के आधार पर था। अभी जो डिस्प्यूट है वहाँ सिर्फ इस बात का चल रहा है कि 15 अगस्त 1947 जो कट ऑफ डेट है प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट के अंतर्गत, उसका उस दिन क्या स्टेटस था यहाँ पर। और अभी जो व्यास जी ताखाना मामले में निर्णय आया है, उसमें यही आया कि चूँकि एएसआई ने मूर्तियाँ वहाँ से बरामद की ताखाने से, और उन मूर्तियों की पूजा 1993 तक होना प्रमाणित भी पाया गया कि वो डीटी हैं, और डीटी कानूनन अबोध शिशु हैं। तो अबोध शिशु का स्टेटस होने के बाद एएसआई ने उनको ले जाकर डबल लॉक में बंद रखा। बंद कैसे रख सकते हो, तो अत्याचार हो जाएगा, क्रूरता होगी उनके ऊपर, उनके अधिकारों का हनन होगा। तो यहाँ डीटी के राइट्स को इन्फोर्स करने की बात थी कि इनका भोग राग इमीडिएटली शुरू होना चाहिए। तो उसको जिला मजिस्ट्रेट ने जिला जज के उस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराया। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हों, उनका निस्तारण शीघ्र होना चाहिए, और जितनी जल्दी उसका निर्णय आएगा उतना लोगों का मन भी मिलेगा आपस में। विवाद का समाधान होने के बाद, अयोध्या लेखी निर्णय आने के बाद वहाँ कोई तनाव नहीं है। ये जो काशी विश्वनाथ का इतना बड़ा धाम बना है, कॉरिडोर पूरा बना है काशी में, किसी ने सोचा नहीं था, ये काफी नहीं है? बहुत कुछ है, लेकिन इससे ज्यादा अभी जो बचा हुआ कार्य है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जो बचा हुआ काम बचा है अभी। तो आपको नहीं लगता कि ये मसले छोड़ देने चाहिए? अयोध्या का बड़ा मंदिर हो गया, यहाँ काशी और मथुरा में तो मंदिर है ही। नहीं छोड़ना चाहिए, जो अपना है वो चाहिए। हिंदू धर्म हक नहीं छोड़ा जा सकता है अपना, जो हमारा हक है। जैसे नंदी जी वेट कर रहे हैं, तो उनको उनसे मिलवाना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। जी, पर ये एक दूसरे पक्ष का भी कहना है कि जब हमारी मस्जिद इतने सालों से है, तो एक प्यार मोहब्बत से रहा जाए, इकट्ठा रहा जाए, उसमें क्या बुराई है? बस प्यार मोहब्बत हम एक ही तरफ से नहीं होनी चाहिए ना, दोनों तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, आप एक जब एविडेंसेस मिल रहे हैं, नीचे सब पिलर्स वगैरह जो ब्रिक्स हैं, जो यहाँ पर चित्र मिल रहे हैं,
वो सब हिंदुओं से रिलेटेड ही हैं। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग ये भी कह रहे हैं कि हजारों मंदिर टूटे हैं, लेकिन सिर्फ काशी, मथुरा और अयोध्या का सेटलमेंट हो जाए फिर किसी और चीज़ की बात नहीं होगी, तो आप इसमें विश्वास रखते हैं? और पहले अच्छे से मांग रहे थे तब तो नहीं दिया ना, जब तीन ही मंदिर मांगे जा रहे थे तब तो नहीं माने। अभी फिलहाल जो चीज़ हिस्टोरिकल अपने को बिलोंग करती है तो वो तो डिजर्व करते ना हम लेना। तो 3 पे नहीं रुकने की कोई बात है, अब पहले थी वो बात, आराम से लेने की बात थी ना, आराम से दे देते पर नहीं दिए ना। तो इससे क्या समाज में जो सौहार्द है वो कम नहीं होगा? कैसे तो इतने बहुत सारे मसले उठते रहेंगे। मसले जो भी उठेंगे वो कानून द्वारा उनको जो है ना निष्कासित किया जाएगा, उनका निवारण होगा, और जो हमारा हक है वो जरूरी क्लियर होना चाहिए, वो मिलेगा। इलेक्शन में ये मुद्दा होगा मंदिर का, या इलेक्शन में डेवलपमेंट जॉब का मुद्दा होगा? सब होगा, इसका भी होगा उसका भी होगा। अच्छा, साथ साथ सबका होना है। अब हम लोग के मस्जिद से हम लोग का कुछ नहीं होता, हम लोग को जहाँ चाहे वहाँ नमाज़ पढ़े, हम लोग के लिए हर एक जगह मस्जिद है, कोई वो नहीं है। तो मस्जिद अगर चली भी जाएगी, अगर हमारे उसमें नहीं है तो उससे हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कह रहे हैं कि सद्भाव बना रहना चाहिए? हाँ, रहना चाहिए। Politically speaking, the temple movements have always been a bit of a tricky subject for all parties. While the BJP as a party and as a movement has put its faith behind these temple reclamations, when in power, they've kind of stayed away from making any direct statements, which is why that Yogi Adityanath statement was a bit of a flummoxing statement, because so far their top leaders in power, those in positions of power, have not said anything directly. Could there be a change? Could they feel more confident because they are, feeling like the third term is almost done? Could they feel more confident about putting their weight as a government behind these movements? Well, Shivani, there seems to be a change, because I think the BJP especially has seen that when the Ayodhya temple has been delivered, the change in the mood of the people. People are more firmly backing the BJP, and this is something that Mr. Narendra Modi, earlier did not speak so clearly about, these temple movements. But since the Ram temple has happened, we have seen a special resolution in Parliament. We have seen the BJP bring a resolution to the National Executive, and Mr. Modi has been citing in his speech after speech that it is only his government which has made the Ram temple possible. Will this change in the coming times also in the matter of Kashi and Mathura? Will the BJP adopt a more fervent tone on these subjects? These are also temples, which Hindus rightfully should be theirs, and such issues be solved. We took this journey across UP from Ayodhya to Mathura, and right now we are back in Varanasi. You can see behind us, there is the Kashi Vishwanath temple, and there is the Gyanvapi Mosque, a dispute which is raging right now, perhaps the most raging dispute right now, Shivani. Absolutely, most raging. A lot of various petitions are coming up, and of course with it is the challenge to the 1991 Places of Worship Act, although they're sidestepping it. But I think along with the BJP that has always backed temple reclamation, this is going to be a bit of a challenge for the other opposition parties too, because they may have learned that either opposing the Ram temple in Ayodhya or keeping a distance from it did not quite work out very well for them. Could they also do a rethink is another big question ahead of the general elections in 2024.